हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हार्ट। तो आज हम हार्ट के एनाटॉमी, लोकेशन, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity, posterior to the sternum and superior to the diaphragm and between the lungs and tip of heart is called apex, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो हार्ट की 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट की सुपीरियर लेयर होती है और एंडोकार्डियम हार्ट की सबसे इनर लेयर होती है। मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट की 4 वॉल्स होते हैं, मिट्रल वॉल जिसको हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, ऑर्टिक वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल एंड पल्मोनरी वॉल। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट पंप ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल्स ऑफ बॉडी एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। Next is the blood is carried from the heart to the organs through arteries, arterioles and capillaries. Blood return to heart through venules or veins. हम बात करते हैं अब लेयर ऑफ हार्ट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पेरिकार्डियम इज द सुपीरियर लेयर ऑफ द हार्ट। तो पेरिकार्डियम के अकॉर्डिंग the heart is surrounded by fibrocilious sac called pericardium. Function of the pericardium is to limit cardiac distension and restrict extensive movement and protect and lubrication. Pericardium is composed of visceral pericardium, parietal pericardium and pericardial cavity. Next layer is endocardium. It is the innermost, deepest layer of the heart, line the heart chamber and the wall, smooth thin lining to reduce friction of blood flow through the chamber and cardiac conduction system located in his layer. Next layer is the myocardium. Myocardium is the middle, thickest layer of heart, contain the muscles fiber which are responsible for the pumping and contraction of this layer allow blood to the pumped through the blood vessels. अब हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। नंबर 1 इज राइट आर्टरियम, नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम बात करेंगे अपर चैम्बर। तो अपर चैम्बर आर आर्टरियम, राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम, जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि अपर जो है आर्टरियम है। अब हम बात करते हैं अपर चैम्बर की, जिसमें राइट आर्टरियम जो क्या करता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द superior vena cava and inferior vena cava, and the left atrium receive oxygenated blood from the lung through the pulmonary vein. अब नेक्स्ट है लोअर चैम्बर। तो लोअर चैम्बर आर 2 ventricles, right ventricles and left ventricles. Right ventricles receive deoxygenated blood as the right atrium contract. In the left ventricle receive oxygenated blood as the left atrium contract. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वॉल ऑफ द हार्ट। तो वॉल आर लोकेटेड विद इन चैम्बर ऑफ द हार्ट। द फंक्शन ऑफ वॉल कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो वन वे फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू चैम्बर from the heart to the body. In this 4 wall are known as tricuspid wall, pulmonic या pulmonary wall, mitral wall या aortic wall. Tricuspid wall is a atrioventricular wall situated between atria and the ventricle and control the opening between the right atrium and the right ventricle. In the mitral wall is a atrioventricular wall situated between atria and ventricle and control the blood between the left atrium and the left ventricle. Next is the pulmonic या pulmonary wall is a semilunar wall which controls the blood leaving the heart, situated between the right ventricle and pulmonary wall, control the flow of blood from the right ventricle and prevent blood flow back to the right ventricle as it relaxes.
Next is the aortic wall. Is a semilunar wall which control the blood leaving the heart and control blood flow between left atrium and the aorta. Next is the conducting system. So cardiac conduction is the rate the heart conduct electrical impulse. The electrical impulse determines the order in which chamber contract the heart rate and the path the impulse travel. In this conducting system, the sino-arterial node जिसे हम ऐसे नोड भी कहते हैं is also known as the pacemaker of the heart. The sino-arterial node is located in the upper wall of the right atrium and made up of nodal tissue, both muscles and nervous tissue, and there the electrical impulse begins. Next is the AV node, जिसका full form है arterioventricular wall, is located between arteria and ventricles of the heart, made up of nodal tissue, and the electrical impulse carried from the SA node and the AV node is stimulated. The AV node delay the path of the impulse. Next is the arterioventricular bundle branches are located between the artery and the ventricles. Fibers branches into two bundles left and right side of the heart. The electrical impulse travel from the AV node to bundle branches after the arteria have contract and empty. AV bundle branches then carry the impulse down to the center of the heart to the left and right ventricle. The AV bundles start to divide further into Purkinje fiber. Purkinje fiber located at the end of AV bundle, branches at the base of heart, and the Purkinje fiber are responsible for the contraction of ventricles. Thank you.